Hello children, how are you all? Children, I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the video, complete your work in book. Children, other than that, go through the chapter, read the chapter many times and learn the spellings, because spellings are very difficult. There are big spellings which are quite difficult for you, and learn the spellings and try to understand the meaning of these spellings. Then only you will be able to learn the concept properly, and then only you will be able to understand the chapter. So children, let us start today's class. Before that children, once again I welcome you all to computer class 1. So here is computer class 1. Children, in the previous video we were doing chapter 5. As you know children, our chapter 5 is turning on and off a computer. So we had completed the chapter and we were doing book exercise. So children, in book exercise also we had completed question number A and B. Book exercise page number 37 we had completed question number A and B. Today we will be doing question number C and then D and E children. So before that children, as we normally do, we will revise what we did in our previous video. So let us start. Children, in the previous video we had done question number A, that is tick the correct answer. So here children, we have computer is a dash made machine. As we know children, computer is a man-made machine. We all know computer is made by man. That is why we call it as man-made machine. So our first statement is children, question number A. Statement number 1. First statement is a computer is a man-made machine. Man-made machine. So here in the blank we will write man. As a computer is a machine and it is made by man, so we call it as man-made machine. Computer एक machine है जिसे man ने बनाया है, and that is why we call it as man-made machine. तो यहाँ पे आपके बुक में made machine लिखा हुआ है. You will write man, and the options are children man, God and animal. It is neither made by God nor animal. We all know गॉड ने नहीं बनाया मशीन को, ना ही एनिमल ने बनाया है, बल्कि मैन ने बनाया है. दैट इज वाई वी कॉल इट एज मैन मेड मशीन. नाउ नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, सेकेंड वन, डैश डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर टाइपिंग द पासवर्ड. सो चिल्ड्रन, फर्स्टली when you switch on a computer, when you switch on a monitor children, you get a screen, you get a window. That window is called welcome window. On that you need to the window ask for the password. When you give that password, you type that password, you have another window. That window is called window desktop. So here children, desktop is written, you will write window. So dash desktop appears, sentences dash desktop appears after typing password. After typing password. So children, when you top, when you type password, you get फर्स्ट विंडो, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. सबसे पहला जो हमको विंडो दिखाई देता है हम उसको डेस्कटॉप कहते हैं. तो यहाँ पे चिल्ड्रन यू कैन सी, जैसे ही आप मॉनिटर को ऑन करते हो, यू गेट अ विंडो. दैट विंडो इज कॉल्ड डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर टाइपिंग द पासवर्ड. सो हियर चिल्ड्रन, here is the first screen which is known as desktop. After giving the password, after typing the password, we get the screen that is called first screen that appears in front of us. That screen is called window desktop. So this is the first screen from where we can do any task, from where we can perform any task. Window desktop appears after typing the password. Window desktop appears after typing the password. ठीक है. So a computer is
a man-made machine. A computer is a man-made machine. Window desktop appears after typing the word. So children, window desktop is the first screen which appears in front of after typing the password. तो सबसे पहले जब हम monitor को on करते हैं, we get a window children. There the window asks you to type the password. After typing the password children, we get another window in front of us. That window is called desktop window. Or this is the first window from where you can work on a computer or the computer is ready to perform any task. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक मैन मेड मशीन है. एज इट इज मेड बाय मैन इट इज नोन एज मैन मेड मशीन. सेकेंड वन इज आफ्टर प्रेसिंग द बटन ऑफ द मॉनिटर. जब आप मॉनिटर को ऑन करते हो, एज यू नो देयर इज अ ऑन ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर. जैसे आप ऑन ऑफ बटन को ऑन करते हो चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंस? You get a window in front of that. That window asks for the password, and after typing the password you get another window. That window is the first window from where you can perform any type of work, and that window is called desktop window या window desktop. तो यहाँ पे हम लिखेंगे desktop is already written, you will write just windows. तो उसके बाद we have children, computer should be turned dash after completing any work. So here 3, in 3 you will write computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Computer should be S-H-O-U-L-D, should be. Computer should be turned off, turned dash T-U-R-N-E, turned dash after completing the work. After completing any work. So children, as you know children, after completing any work you should switch off the appliance which you are using. For example, if you are watching a TV, after watching the TV you will of course switch off the TV. After using the washing machine you will switch off the washing machine. Similarly children, after completing your work on computer you switch off the computer. तो यहाँ you will write switch off या turned off. Switch off के लिए we use the word turned off. So computer should be turned off after completing any work. कोई भी काम आप जब कर रहे होते हो और आपका काम खत्म हो जाता है तो ऑफकोर्स काम खत्म करने के बाद you will what will you do? You will turn off the computer. आप कंप्यूटर को बंद करोगे. तो here children we have 3 statements which we had done in the previous video and I hope you all have understood. So first one is computer. A computer is a man-made machine. Computer is made by man, that is why it is known as man-made machine. Then window desktop appears after typing the password. हम जब भी window desktop हमें विंडोज़ पे पासवर्ड पूछता है, we type password. After typing the password we get another window that is called window desktop. This is the first window from where you can perform any kind of work using the computer. Then children next है, and next we have computer should be turned off after completing the work. So after you complete the work on the computer children you should turn it off. आप उसे बंद कर दोगे. So this is all for first question. I hope you all have done this because we had done in the previous video itself. So let me now come to the next one. Now in the next one children we had match the column. We have match the column. In match the column children we have first step. We are going to write one by one the steps which are involved in switching on the computer. तो यहाँ पे question is match the pictures of the computer A with the step of turning on the computer in column B. So here children pictures are given. Step 1 है, तो step 1 में जो picture है उसके सामने you will write step 1. In step 1 you have picture of switchboard. You have a picture of switchboard. ये switchboard है, यहाँ पे हमारे पास plug point है, इसके बगल में switch है. तो you will match this with the last one turning on the PURN, turning on the power, 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 turning on the power from power switch from the electric board, from the electric
electric board, B-O-A-R-D, board. So first one is, first step पे we have switchboard. Switchboard से you will match with turn on the power switch from the electric board. You all must be having, there must be electric board in your house. सभी के घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा. जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑन करते हैं या फिर हमें उसे यूज़ करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लग इन द वायर. प्लग इन वायर अगर है तो सिर्फ हमें स्विच ऑन करना होता है और हम इसे मेन पावर बोर्ड से यानी इलेक्ट्रिक बोर्ड से स्विच ऑन करते हैं. तो हियर ऑल्सो फर्स्ट स्टेप इज टू स्विच ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम द मेन पावर और इलेक्ट्रिक बोर्ड. देन सेकेंड वन चिल्ड्रन, इन स्टेप 2 वी हैव स्टेप 2 में हमारे पास है, स्टेप 2 हमारा है टर्न ऑन. यहाँ पे यूपीएस है, यू कैन सी वी हैव यूपीएस हियर, ये हमारा यूपीएस है. दिस इज स्विच चिल्ड्रन, ये हमारा स्विच है. ठीक है, दिस इज आवर स्विच. अब दिस इज आवर स्विच. नाउ अब चिल्ड्रन टर्न ऑन यूपीएस. हियर यू आर गोइंग टू मैच दिस विथ TURN, turn on UPS. This one is second, turn on UPS. You will match with turn on UPS. Here you are going to turn on the UPS. This is UPS. इसको हम क्या कहते हैं? हम इसे UPS कहते हैं. यहाँ पे आप UPS को turn on करोगे. This is UPS. Now step 3. In step 3 you have picture of CPU. This is a CPU. ये आपका CPU है. Here also you have a button. This is CPU. Now, so in next step, children, you are going to match with CPU. Third step, switch on the CPU. You will write here switch. आप यहाँ पे लिखोगे switch on CPU. आप CPU switch on करोगे. This is first third step. Now, step 4. Step 4 में you will switch on मॉनिटर. आप मॉनिटर को ऑन करोगे. सो हियर वी हैव अ मॉनिटर. ये हमारा मॉनिटर है. नाउ मॉनिटर को में हियर यू विल स्विच ऑन द मॉनिटर. सो राइट स्विच ऑन मॉनिटर. यू विल स्विच ऑन मॉनिटर. आप मॉनिटर को स्विच ऑन करोगे. उसके बाद स्टेप 4. स्टेप 5. Step 5 में चिल्ड्रन, in step 5 you have a desktop now चिल्ड्रन. आपके पास स्क्रीन है, विंडो है आपके पास. Here in the window you can see there is a space for typing the password. So this is called, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? You have this screen is called where you have, जिस स्क्रीन में आपको वेलकम, यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा. देन एरो की है, दिस इज कॉल्ड टाइप. इसको हम लिखेंगे welcome window. This is welcome window. This is welcome window. This is known as welcome window. We call it as welcome window. Now last one children, आखिरी वाला हमारा है step 6. Step 6 में we have, in step 6 again we have another window. यहाँ पे हमारे पास दूसरा विंडो है जिसमें यहाँ पे हमें फ्लैग बना हुआ है. Here is the flag. This is a flag. ये फ्लैग है. अब इस फ्लैग के सामने यू कैन सी चिल्ड्रन, हियर इन फ्रंट ऑफ दिस वी हैव डेस्कटॉप स्क्रीन. हमारे पास डेस्कटॉप स्क्रीन है. हमारे पास डेस्कटॉप स्क्रीन है. डेस्क TOP टॉप स्क्रीन. दिस इज नोन एज डेस्कटॉप स्क्रीन. सो हियर चिल्ड्रन, दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन ओपनिंग द कंप्यूटर. इन सारे स्टेप्स को यूज़ करके और फॉलो करके वी कैन स्टार्ट अ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर. वेन एवर यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर you have to follow these steps. As we know children, computer is a delicate machine. We should not switch it on or switch it off directly. हम उसे डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते, ना ही खोल सकते हैं. तो यहाँ पे whenever you switch on or switch off a computer, you have to follow certain steps. These are the steps which has to be followed while switching on the computer. So let us see children. First step is step 1.
दिस इज अ प्लग पॉइंट, ये हमारा स्विच बोर्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक बोर्ड पे हमारे पास ऑन ऑफ वाला स्विच होता है। सबसे पहले योर कंप्यूटर इज प्लग्ड इन, यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द प्लग, यानी कि आप यहाँ से पॉइंट को स्विच ऑन करोगे, यानी आप यहाँ के से स्विच को ऑन करोगे। टर्न ऑन द पावर स्विच from the electric board because this is the board from where your computer is getting electricity। यहाँ से कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर टू रन, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के एज इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन। तो यहाँ से हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वंस यू हैव प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी योर कंप्यूटर इज रेडी टू स्टार्ट नाउ। बट चिल्ड्रन, एज आई हैव टोल्ड यू चिल्ड्रन, समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी में गोज ऑफ या इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। एट दैट टाइम वी नीड अनदर ऑप्शन फॉर रनिंग द कंप्यूटर विदाउट इंटरप्शन, दैट इज यूपीएस। यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अगर हम देते रहेंगे तो आर वर्क वो भी इंटरप्टेड, हमारा काम रुकेगा नहीं, वी कैन डू आर वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन। सो हियर दिस इज यूपीएस। After switching on from here, you have to switch it on from the UPS। आपको UPS को से उसको स्टार्ट करना होगा। इसके बाद CPU, this is CPU। CPU is another important part of the computer। All the processing of the computer are done at CPU, so it is very important to switch on the CPU। अगर हम parts की बात करें, different parts of computer की बात करें, तो सबसे important part is CPU। Even though all other parts are also important because all have their own importance in working on a computer, but CPU processing करता है, इसलिए सबसे पहले we will switch on the CPU। So we will switch on CPU from here। We have a button, on off button, we will switch it on। Then we have monitor children, this is monitor। Monitor also has on off button, we will switch on the monitor from here। आप यहाँ से monitor को on करोगे। उसके बाद we have जैसे ही हम monitor को on करेंगे we have a window। there is a window which appears in front of us। this window is called welcome window। यहाँ से हमें एक स्क्रीन मिलेगा या विंडो मिलेगा जिसको हम वेलकम विंडो कहते हैं। एंड ऑन दिस विंडो चिल्ड्रन वी हैव some instructions, that is you have to type password। that window asks for the password as I told you before also children। this computer wants to know whether the computer used by a person is a correct person or not, or right person or not। that is why it asks for a password। when you type the password, immediately you have another window। that window is called desktop window। so desktop window is the first window from where you can perform any task using a computer। so children, if you want to do anything on a computer, this is the first window from where you can do any task। now your computer is ready to perform any task। अब आपका कंप्यूटर एकदम तैयार है कोई भी काम करने के लिए। तो children, these are the 5 steps। by 6 steps, by following these 6 steps children we can switch on a computer। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप को लास्ट में नहीं कर सकते या लास्ट स्टेप को पहले नहीं कर सकते, हमें वी हैव टू मूव इन द गिवन सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में हमको कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है। विद दिस चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव लर्न हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। वी हैड लर्न बिफोर ऑल्सो, नाउ वी हैव प्रैक्टिस्ड ऑल्सो। सो हियर दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम। हमने यहाँ पे आंसर को सामने सामने लिखा हुआ है एंड दीज स्टेप्स हैज़ टू बी लर्न, इसलिए लर्न दीज स्टेप्स चिल्ड्रन। नाउ coming to the next question। now we are going to start the next chapter, next question, that is children question number C। तो ये हमने क्या नहीं था, आज हम question number C से शुरू करेंगे। तो these are the steps which you can write if you want and you have to learn these steps। so children, let us start our next question। our next question is question number C। here we have some statements given and the answer is also given, but the answer is not complete। you are going to read the statement and complete the answer। so children, complete the steps to turn off the computer। children, complete the steps to switch off the या turn off the computer। now children, in the previous question we have learned how to switch on a computer। हमने सीखा कि कंप्यूटर को हम कैसे by following steps we can switch on a computer। now we have also learned how to switch off a computer। switch on करना सीख लिया, पहले वाले क्वेश्चन में हमने रिवाइज भी कर लिया। now we will revise how to switch off a computer। as you know children, while reading the chapter we had done
how to switch off a computer. The same steps are given here. Now you are going to follow these steps one by one and switching off the computer. So children, question is C, complete, C-O-M-P-L-E-T-E, complete, C-O-M-P-L-E-T-E, complete the steps, S-T-E-P-S, steps, complete the steps to turn, T-O-T-U-R-N, turn off, to turn off the computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Now children, we are going to write here and learn the steps which are used to turn off a computer. इसमें थोड़ा सा write देना है. Let me write again. So here the steps, complete the steps, S-T-E-P, steps to T-U-R-N, turn, O-F, off the computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Now, so children, next one, first step children, as we know children, first step is click on dash button. So it is written here, first step mein, it is written here, step, S-T-E-P, step 1. In step 1 children, click, C-L-I-C-K, click, O-N, on, click on, here is a button, click on dash, B-U-T-T-O-N, button, click on dash button, S-T-A-R-T. So here you are going to write the word start. यहाँ पे आप start लिखोगे. तो words are given here. So first letter is given and the last letter is given. You are going to fill the words in between. So here children, you will at first step you will click on the start button. सबसे पहले step में आप start button पे click करोगे. तो this is S-T-A-R-T, start. So first step is to click on start button, and then second step में it is given in your book children. Here it is given to step 2, S-T-E-P, step 2. In step 2, click on, where will you click children? You will click on, second में you will click on shut down button, S-H-U-T-D-O-W-N, shut down, B-U-T-T-O-N, down button. So here children, the letters given are, S is given and D, S, U, then we have D, then we have N. These letters are given. Now children, you are going to write here by writing, you are going to complete the letter by writing the missing letters here. You are going to complete the word by writing the missing letters. So click on shut down button, shut, S-H-U-T, shut, D-O-W-N, down. तो children first step में click on start button, click on start button. सबसे पहले हम start button पे click करेंगे, then click on shut down button. उसके बाद जब हम start button पे click करेंगे children, you will have a menu in front of you, and menu में आपको there will be a menu, and in the bottom of the menu on the other side में आपके पास shut down का button होगा. You will click on that shut down button. जैसे आप shut down button पे click करोगे children, your monitor will be, मतलब your windows will be closed. आपका window बंद हो जाएगा. Now after shutting down the window, what will you do children? You will you will switch on the monitor power button. Monitor में भी power button होता है. You will switch off that button. जो monitor में on off का button होता है, you will switch on off that button. तो switch off, S-W-I-T-C-H, switch. आप लिखोगे switch off, O-F-F, off the, switch off the. यहाँ पे हमारे पास word है power, P-O-W-E-R, power, and here we have button, B-U-T-T-O-N, button.
तो यहाँ पे द लेटर्स विच आर गिवन आर M, M is given, N is also given, M, N, I, T is given, O, or we have, yes, M, N, T is given, and remaining we have to fill. So children, as you have learned the spelling of monitor, from there you can complete this word. Switch off the monitor power button. You will switch off the monitor power button. M-O-N-I-T-O-R. Monitor power button. Switch off the monitor power button. Then next one is step, S-T-E-P, step 4. स्टेप 4 में हमारे पास है स्विच ऑफ, SWITCH, स्विच ऑफ द UPS, बिकॉज वी हैड स्विच्ड ऑन UPS ऑल्सो, हमने UPS भी बंद ऑन किया हुआ था, तो उसे भी हम बंद करेंगे। तो यहाँ पे स्विच ऑफ द UPS, आप UPS बंद करोगे, U इज गिवन, S इज गिवन, यू हैव ओनली टू राइट P, BUTTON button, BUTTON button. So switch off the UPS button. Now children, last one is step 5. Step 5 में you will write switch off, SWITCH, switch off. Last में you will write switch off the main power. We have two boxes here. You have two boxes here. Power, button. Now BUTTON button. Switch off the main power button. तो यहाँ पे हमारे पास है M और N. M, N, P, then है W, R. यहाँ पे भी है M, हमारे पास है M, we will write M, A, I, N, P, O, W, E, R, power. So this is power. So last step में children, switch off the main power button. यहाँ से you will switch off the main power button. आप main power button को बंद करेंगे. So let us revise children. This is question number C. In the previous chapter, we learned how to switch on a computer. We revised all the steps which we had studied in the chapter to how to switch on a computer in the form of match the column. Here we have all the steps where we can switch off the computer, to how we can switch off a computer, and this is in the form of fill in the blanks. So some of the letters are given, we have filled the missing letter and completed the word. So first step, if you want to switch off a computer, first things children, you will start from the desktop. आप desktop से start करोगे, you will go to the start button. As you know, start button is at the bottom of the desktop. You will go to start button, you will click on start button children, you will get a menu. In the menu below at the bottom you will have shutdown button. You will click on shutdown button and immediately your computer will be, your monitor will be, your window will be, monitor nahi, window will be switched off. Now your window is switched off, that means CPU is also switched off. उसके बाद you will switch off the monitor. अब आपको monitor ऑफ करना है क्योंकि जब आपने ऑन किया था तो there was a switch on monitor, तो आपने monitor के power button को ऑन किया था. अब children, you will switch on the monitor power button. After switching on the monitor power button, you will switch off the UPS. आप UPS को switch off करोगे क्योंकि UPS भी you had switched on. You will switch off the UPS and then you will switch off the main power. आप इसके बाद main power को switch power से कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे, यानी मेन पावर के स्विच को ऑफ करके कंप्यूटर को बंद करोगे. यू विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रोक दी. नाउ चिल्ड्रन, योर कंप्यूटर इज कम्प्लीटली स्विच्ड ऑफ. आपका कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो गया बिकॉज यू हैव वन बाय वन यू हैव स्विच्ड ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर.
computer. So with this children, we have learned how to switch on a computer as well as how to switch off a computer. So children, learn, go through the exercise, learn whatever we have done today. We will meet once again in our next period children. Till then, have a nice day ahead. Thank you. सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 था विलोम शब्द। विलोम शब्द हमने पढ़ा, उसके अभ्यास किए और मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों, विलोम शब्द का अभ्यास भी आपने कर लिया होगा। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 13। पाठ 13 में हमारे पास है रचनात्मक कार्य। बच्चों, रचनात्मक कार्य में हमें बहुत सारी चित्रकथाएँ दी गई हैं, यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। और इस श्रृंखला में पहली कहानी जो हमारी थी, पहली कहानी में हमने लालची कुत्ते वाली कहानी पढ़ी थी। इस कहानी को पढ़ करके हमने समझा था और कहानी पूरी करो शीर्षक में इस कहानी को लिखा था और शब्दों की सहायता से उस कहानी को पूरा भी किया था। तो यहाँ पे बच्चों, हमारी अगली कहानी है लालची कुत्ता के बाद हमारी अगली कहानी है घमंडी खरगोश। तो लालची कुत्ता हमने खत्म कर ली थी, आज हम करेंगे घमंडी खरगोश। तो बच्चों, ये कहानी भी एक चित्रकथा है, आप सभी जानते हो। इस कहानी में हम चित्र दिए गए हैं, हम चित्रों को पढ़ेंगे और चित्रों द्वारा इस कहानी और जो दिए गए संवाद को पढ़ करके इस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। मतलब संवाद नहीं है,